Good morning, students. This is Priyanka Bansal from SKM Public School. Students, today we will discuss the types of cooperative societies. Okay, and before that, I am going to introduce, or we can say that revise the meaning of a cooperative society. A business organization can take many forms. We know that the cooperative societies is the one form of private sector. Okay, so a business organization can take any form. We can say that a business organization may be related to sole proprietorship, okay, partnership, HUF. It can be in any form, okay, company. So one such form is that of a cooperative society. उनमें से एक form कौन सी है? That is related to cooperative society. Such societies have unique feature of joint ownership and democratic leadership. Okay, इनकी एक स्पेशल फीचर क्या होती है? डेट दे आर हैविंग द जॉइंट ओनरशिप एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप इन दिस. ओके, so first I'm going to introduce a cooperative society is not a new concept. This is a very old concept. Okay, it prevails in all the countries. Okay, this is almost a universal concept. Universal concept means it is acceptable by all the countries. The cooperative society is active in all the countries worldwide. Okay, and is represented in all the sectors including agriculture, food, finance, healthcare. Okay, cooperative society can be formed in any sector related to, it can be related to agriculture, food, finance, etc. Okay, so it is a universal concept, means it is prevailing in all the countries. Okay, so now we will discuss why there was a need of cooperative societies. Okay, so now we will discuss the need of cooperative society, that why these cooperative societies has been formed. Okay, so to protect the interest of the weaker section, why it was formed? To protect the interest of weaker section, the cooperative society is formed. मतलब क्या है? अब देखो, अपन को पता है कि जो cooperative society के members हैं, the cooperative society is formed to provide the benefit to its member only. Okay, तो ये क्या है कि ये जो weaker section था, उनके interest, उनके profit को we can say that the interest means हित. ठीक है, उनके हित को ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. ओके, हेयर द इंटरेस्ट मीन्स हित, मतलब जो अपने भलाई वाला होता है ना, कि उनके हित को ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. ओके, सो इट इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन. वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से किया गया है, ऑफ पर्सनस हुज मोटिव इज़ वेलफेयर ऑफ द मेंबर. ओके, इट इज़ फॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स ओनली. So now we will discuss the types of cooperative society, and today we will discuss the first three types of cooperative society. Okay, first type is producer cooperative. Okay, first type is producer cooperative. Producer means who is producing something. Okay, जो कुछ ना कुछ production कर रहा है, who is engaged in some production. So why the producer cooperative is established? To protect the interest of small producers. अपने को पता है that there is a small scale businesses also. Okay, the persons who are working at the small level means they are the small producers. These societies are set up. Okay, why these producer cooperatives are established? To protect the interest of the small producers. Okay, जो small scale के ऊपर काम कर रही हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को इस्टेब्लिश किया गया है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स मे बी फार्मर. अब वो बता रहा है कि हु कैन बी द मेंबर्स ऑफ दीज कोऑपरेटिव्स. दे कैन बी फार्मर्स, लैंड ओनर्स, ओनर्स ऑफ द फिशिंग ऑपरेशंस, या फिर एनिमल्स जो हस्बेंड्री कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स हु आर वर्किंग एट ए स्मॉल लेवल, और दे आर नॉट हैविंग द मच फाइनेंस दैट दे कैन इन्वेस्ट इन ए बिग बिजनेस. ओके, so the producer cooperatives are established for the small producers. In this, farmers, landowners, owners of the fishing operations, or any person who is doing animal husbandry can be part of a producer cooperative. Okay, to increase the marketing possibilities and production efficiency. Why it is established? To increase the marketing possibilities means उनके मार्केट के जो प्रमोशन की फैसिलिटीज़ हैं ज़्यादा देने के लिए, और प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, और दैट द प्रोड्यूसर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन रेडी टू वर्क टुगेदर फॉर ए बिग चेंज. ओके,
So producer cooperatives are established for the small producers and they perform several activities. Which type of activities they perform? They perform several activities. How they are performing the activities? These activities can be related to processing, marketing, distribution activity of their own product. Okay, they are making the production in the processing, and they are doing the production activity. In the marketing, there is a promotion of their product. Okay, marketing means to promote the product so that the sale can be increased, and the distribution, you know, that the sale of the product or the delivery of the product. Okay, they are promoting their own product. This helps in lower cost and strains in each area with the mutual benefit to each producer. अब इसका benefit क्या होएगा? that it will make the low cost. Okay, and it will give the best benefits as compared to their individual work. ठीक है, इसके अंदर क्या है? कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं. ओके, दे आर डूइंग वर्क टुगेदरली. इंडिविजुअल के कंपैरिजन में उनको क्या है? ज़्यादा बेनिफिट होगा व्हेन दे विल डू together. Okay, so types of producer cooperative societies are that one type is in which they provides raw material, input, machinery, etc., so that producer can concentrate on the production of activity. Okay, one type is in which raw material is converted into finished product. Okay, we can say that they are involved in the production activity. Okay, in this we can say that this is the type in which the persons are involved in the production activity. Okay, they are converting the raw material into the final product. And the second is related to those who sells the goods which are already produced. ठीक है, वो क्या करते हैं? सिर्फ एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का काम करते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट द प्रोड्यूसर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी. इन द सेकेंड पार्ट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट विच आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड. ओके, so next is consumer cooperatives. Okay, first we have discussed about the producer cooperative which is established for the benefit of the small producers. Okay, and second is consumer cooperative. These businesses are owned and governed by consumers of a particular area for their mutual benefit. अब क्या है कि कुछ consumers मिलके क्या, consumer is the final user of the product. Okay, कुछ consumers मिलकर क्या कर लेते हैं? एक cooperative society को establish कर देते हैं and they are working for their mutual benefit. मतलब उसके अंदर क्या है? सभी के जितने भी उसके members हैं उनके benefit के लिए काम किया जाएगा. Their view is to provide daily necessary commodities. Okay, in which एट ए ऑप्टिमम प्राइस. ठीक है, एक रिजनेबल प्राइजेस के ऊपर क्या है? जो नेसेसिटी के प्रोडक्ट होते हैं, द बेसिक नीड्स विदाउट विच ए पर्सन कैन नॉट सर्वाइव. ओके, तो ये क्या करते हैं? डेली की जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं उनको ये ऑप्टिमम प्राइस मीन्स एट द रिजनेबल प्राइजेस ये क्या करते हैं? प्रोवाइडेड करते हैं. रैदर देन अर्निंग ए प्यूनरी प्रॉफिट देयर एम इज़ टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कंज्यूमर. अब देखो उनका क्या है? प्रॉफिट अर्न करना इतना मोटिव नहीं होता. दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर कंज्यूमर्स एंड दे आर चार्जिंग ऑप्टिमम प्राइस और द रिजनेबल प्राइस सो डैट द कंज्यूमर्स हु आर फ्रॉम द बैक वी कैन से बैकवर्ड एरिया और हु आर फाइनेंशियली वीक. ओके, दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ इन ए बेटर मैनर. ओके, third is credit unions. Okay, this is the third part which is related to credit unions. Credit unions are generally member on financial cooperatives. ठीक है, जो किससे रिलेटेड होती है? फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रही हैं. ठीक है, देयर प्रिंसिपल इज ऑफ पीपल हेल्पिंग पीपल. ठीक है, उनका प्रिंसिपल क्या होता है? कि जो पीपल होते हैं हेल्पिंग पीपल, मतलब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. पीपल हेल्पिंग पीपल मीन्स द पर्सन्स हु आर लिविंग इन द सोसाइटी दे हेल्प to the other persons who are living in their own society. Okay, they provide credit and financial services to the members at competitive prices. अब इसके अंदर क्या है? they are providing the finance or we can say they are providing the loans to the members of credit unions at a reasonable interest rate so that they can better utilize their loans and they can invest their loans in the businesses and the burden of the interest will be less in this
यूनियन। ओके, सो ईच एंड एवरी डिपोजिटर हैज़ द राइट टू बिकम ए मेंबर। इसके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है और उस जो भी इसके अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करेगा द पर्सन विल बी द मेंबर ऑफ दैट यूनियन। ओके, मेंबर्स अटेंड द एनुअल मीटिंग एंड आर गिवन टू राइट टू इलेक्ट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर क्या है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा हु विल मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रेडिट यूनियंस। ओके, and the person who is depositing the amount in the credit union will be known as the member of that credit union. Okay, and why this is established? This is established to provide the financial help to the members of this union. Okay, in this they are providing the loans at a reasonable rate and the interest rate is comparatively low as comparison to the other financial institutions. Okay, so students, today we have discussed that three parts of or we can say three types of cooperative societies. Okay, revise this topic, and if you face any problem you are free to ask. Stay home, stay safe. Thank you.